Welcome to Camtasia Studio 7. If you're new to Camtasia Studio and you want to get started quickly, हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है PHP डाटा टाइप्स। आज हम सीखेंगे कि PHP लैंग्वेज के अंदर कौन कौन सी डाटा टाइप्स अवेलेबल हैं और उनको हम अपने कोड के साथ यूज़ कर सकते हैं। PHP data types. Variables can store data of different types and different data types can do different things. PHP supports different data types which are as follows: string, integer, float, boolean, array, object and null data type. PHP string. PHP string basically is a sequence of characters. For example, hello world is an example of a string. A string can be any text inside quotes. Strings को आप डबल कोट्स के अंदर लिख सकते हैं और यहाँ हम आपको एग्जाम्पल के ज़रिए शो करवाएंगे कि PHP स्ट्रिंग किस तरह से लिखी जाती है। यहाँ PHP कोड के अंदर x और y दो वेरिएबल हैं जिनके अंदर वैल्यू स्टोर है हेलो वर्ल्ड। इको का फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं x वेरिएबल की वैल्यू को शो करवाने के लिए। देन ब्रेक लाइन हमने यूज़ की। देन इको के फंक्शन के साथ हमने y का वेरिएबल यूज़ किया है y की वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए। अब हम देखते हैं कि इस कोड की आउटपुट कैसे जनरेट होगी। यहाँ पर आपको प्रीवियस कोड की आउटपुट शो हो रही है। हेलो वर्ड 2 लाइंस में डिस्प्ले हो रहा है जो कि इको का कीवर्ड यूज़ करने से यहाँ पर हमें आउटपुट शो हो रही है। PHP integer. PHP integer is a whole number. It is a number between 2147483648 negative and positive 2143483647। यहाँ कुछ रूल्स हैं जो कि इंटीजर्स के हवाले से आपके जहन में होने चाहिए। इंटीजर वैल्यू के अंदर कोमा और ब्लैंक नहीं हो सकता। इंटीजर वैल्यू जो है वो 0 to 9 के दरमियान कुछ डिजिट्स होंगी। इंटीजर वैल्यू के साथ आप डेसिमल पॉइंट नहीं यूज़ कर सकते। इंटीजर वैल्यू कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ एक एग्जांपल है जिसके ज़रिए हम आपको समझाएंगे कि किस तरह इंटीजर टाइप का वेरिएबल आप अपने कोड के अंदर लिख सकते हैं और वो किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करता है। यहाँ हमने x नाम का एक वेरिएबल लिया है। PHP में वेरिएबल को लिखने से पहले $साइन लिखा जाता है। var_demp का फंक्शन यूज़ किया गया है जो कि आपको आपके वेरिएबल की डाटा टाइप और उसकी वैल्यू को रिटर्न करता है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे यहाँ पर आपको आउटपुट शो की जा रही है कि x टाइप का वेरिएबल किस डाटा टाइप से ताल्लुक़ रखता है और उसकी वैल्यू क्या है। PHP फ्लोट डाटा टाइप। फ्लोट डाटा टाइप को डबल भी कहा जाता है। इट इज़ अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट और नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दी जा रही है जिसमें आपको शो किया गया है कि x टाइप का वेरिएबल फ्लोट टाइप का नंबर किस तरह से स्टोर करता है और var_demp का हमने फंक्शन यूज़ किया है जो कि रिटर्न करेगा इस वेरिएबल की डाटा टाइप और उसकी वैल्यू। x नाम के वेरिएबल के अंदर 10.365 वैल्यू स्टोर है जो कि एक फ्लोट टाइप वैल्यू है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमने PHP का कोड लिखा है उसकी आउटपुट किस तरह से जनरेट हो रही है। x वेरिएबल की टाइप फ्लोट है और उसकी वैल्यू है 10.365 जो कि आउटपुट में शो हो रही है।
PHP Boolean data type. Boolean data type actually टू स्टेट्स को शो करती है, आइदर ट्रू और फॉल्स। x एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हम ट्रू और फॉल्स रख सकते हैं और इसको हम बूलियन टाइप का वेरिएबल कहेंगे। बूलियन टाइप के वेरिएबल एक्चुअली कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर यूज़ किए जाते हैं फॉर टेस्टिंग पर्पस। PHP array is also a data type. An array stores multiple values in one single variable. यहाँ पर हम आपको एक एग्जाम्पल शो करवा रहे हैं जिसके अंदर cars नाम का एक array है जो कि वैल्यू को स्टोर कर रहा है और उसके अंदर कार के डिफरेंट नाम जो हैं वो हमने सेव किए हैं, जैसे वोल्वो, BMW, टोयोटा। और नेक्स्ट हमने var_demp का फंक्शन यूज़ किया है कार्स की वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए। अब हम देखते हैं कि इसकी आउटपुट किस तरह से जनरेट होगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसने वेरिएबल की टाइप भी शो की है, उसका इंडेक्स भी शो किया है और उस इंडेक्स के अंदर जिस टाइप का डाटा स्टोर हुआ है उसने वो भी शो किया है कि वन इंडेक्स के ऊपर वोल्वो स्ट्रिंग सेव है और नेक्स्ट BMW है और उसके बाद टोयोटा जो है वो सेव है अरे नाम के वेरिएबल के अंदर। PHP null value. PHP null value is a special data type which can have only one value, that is null. A variable of data type null is a variable that has no value assigned to it. अगर आप किसी वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करना चाहते तो उसकी वैल्यू आप नल रख सकते हैं। अगर किसी वेरिएबल को आपने क्रिएट तो किया है लेकिन आपने उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की तो भी ऑटोमेटिकली उसको नल वैल्यू असाइन हो जाती है। वेरिएबल्स की वैल्यू को एम्पिटाइट करने के लिए या उनकी वैल्यू को नल करने के लिए आप सेट कर सकते हैं वेरिएबल की वैल्यू को एज अ नल, विच मीन्स नथिंग, दिस वेरिएबल होल्ड्स नो वैल्यू। यहाँ पर एग्जाम्पल है, x नाम का वेरिएबल हमने लिया, उसके अंदर हमने स्ट्रिंग पास की है हेलो वर्ल्ड। देन हमने फिर x टाइप का एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर हमने वैल्यू पास की नल। दिस शोज दैट नाउ x इज़ अ वेरिएबल ऑफ डाटा टाइप नल। देन हमने var_demp का फंक्शन यूज़ किया और x की वैल्यू को डिस्प्ले करवाया तो उसने उसकी वैल्यू को नल शो किया और उसकी डाटा टाइप चूँकि नल है तो आपको आउटपुट में नल शो हो रहा है। You're in the right place. We encourage you to watch this 5-minute video to learn the basics of using the editor, including how to navigate the timeline, make some basic edits, and add special effects. The preview window is where you see the video during playback. The playback controls are located under the preview window. In fact, the video you're watching in the preview window is a sample project playing directly from the timeline you see below. After you watch this video, we hope you take some time to practice what you've learned using the content on the timeline. So let's start with the timeline. This is where you assemble and edit your videos. At the top of the timeline, tick marks represent time in terms of minutes and seconds. When building a video, you'll work in a horizontal manner, beginning from the left and moving sequentially through time towards the right. To make precise cuts and selection, use the zoom slider to magnify the view of the timeline. And when adding elements to your video, such as a call-out or audio clips, these are placed on different tracks. Tracks are created automatically, when you need them, when elements are added to the timeline. So depending on your video, you may be working with several tracks at one time. To change the position of an element on the timeline, just drag it. To change the length of an element, drag the edges in either direction. An important part of the timeline is the playhead. The playhead moves the timeline and indicates the current frame displayed in the preview window.
To view your video, click play in the preview window. Notice how the video and the timeline's playhead stay in sync? Click anywhere on the timeline and the playhead moves to that point. The green section of the playhead is called the in point. Click and drag the in point to make the beginning of a selection. The red section of the playhead is called the out point. Just click and drag the out point to make the end of a selection. To bring the sections of the playhead back together, double-click the gray playhead. To split a video clip, position the playhead at the desired location and click the split button. And if you want to remove a portion of your video, make a selection with the in and out points, then click the cut button. If you make a mistake while editing, click the undo button. Next, we'll look at the clip bin and the library. The clip bin holds recordings, audio files, images, and title slides being used in the project you're currently working on. Then there's the library. It stores video clips, intros, callouts, title slides, and other elements that you want to use from project to project. The library is also pre-populated with professional animations, music, sound effects, and other content you can use in your video for free. To add your own clips or video sequences to the library, make a selection on the timeline, right-click, and choose Add to Library. To include clips and other elements in your video, drag them from the clip bin or library and drop them onto the timeline. The tabs located above the timeline are task pages used for adding and editing special effects. You can add callouts to emphasize a key point. You can insert a transition between clips for a professional look. Apply zoom and pan effects to focus on important details. And draw attention to the cursor by changing the color, size, and more. If you double-click an element on a track, the playhead moves to the beginning of that element, and its task page opens, allowing you to make edits to that element. So we've shown you a few ways you can navigate and edit your video. But how do you get content into your video? Well, to make a new screen recording, click the Record Screen button. If you already have an audio or video recording to use, click the Import Media button. When you've made edits and added effects to your video and you're ready to share it, you need to produce the project to create a shareable video. Click the Produce and Share button, step through the wizard, and Camtasia Studio creates a viewer-friendly, shareable MP4 file ready to upload to screencast.com, your blog, or a website. Well, it's time for you to try Camtasia Studio out for yourself using the content on the timeline. The help file in Camtasia Studio will help you use each of the Camtasia Studio features and applications. The Learning Center on TechSmith.com has in-depth video tutorials and other sample projects to download and practice with. So we hope you enjoy Camtasia Studio. And happy screencasting!